हेलो गाइस, मैं हूं तन्मय भट्ट और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तन्मय भट्ट में। दोस्तों, सी प्लस प्लस के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि बेसिक इंट्रोडक्शन हमने सी प्लस प्लस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं हम बेसिक इनपुट आउटपुट पॉइंटर्स और एरर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं कि पॉइंटर्स कैसे सी प्लस प्लस में उसे यूज किया जाता है। तो उन सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम पहले बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। एज mentioned before, C++ is one of the most widely used programming languages. It has its presence in almost every area of software development. I am going to list few of them here. Applications software development. C++ programming has been used in developing almost all the major operating systems like Windows, Mac, OS X and Linux. Apart from the operating systems, the core part of many browsers like Mozilla Firefox and Chrome have been written using C++. C++ also have been used in developing the most popular database system called MySQL. Programming languages development. C++ has been used extensively in developing new programming languages like C#, Java, JavaScript, Perl, Unix, C Shell, PHP and Python and Verilog, etc. Computation programming. C++ is the best friend of scientists because of fast speed and computational efficiency. Games development के बारे में हम बात करते हैं। C++ is extremely fast, which allows programmers to do procedural programming for CPU-intensive functions and provides greater control over hardware, because of which it has been widely used in development of gaming engines. Embedded systems. C++ is being heavily used in developing medical and engineering applications like softwares for MRI machines, high-end CAD/CAM systems, etc. अब दोस्तों हम बात करते हैं C++ ओवरव्यू के बारे में। C++ is a statically typed, compiled, general purpose, case sensitive, free from programming language that supports procedural, object-oriented and generic programming. C++ is regarded as a middle-level language as it comprises as a combination of both high-level and low-level language features. C++ was developed by Bajarin Stroup starting in 1979 at Bell Labs in Murray Hill, New Jersey, as an enhancement to the C language, and originally named C with classes, but later it was renamed C++ in 1983. C++ is a superset of C, and that virtually any legal C program is a legal C++ program. Not a programming language is said to use static typing when type checking is performed during compile time as opposed to run time. अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। C++ fully supports object-oriented programming, including
the four pillars of object-oriented development: encapsulation, data heading, inheritance and polymorphism. पहले हम बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के बारे में. Standard C++ consists of three important parts: the core language, giving all the building blocks including variables, data types and literals, etc. The C++ standard library, giving a rich set of functions manipulating file strings, etc. The standard template library, giving a rich set of methods manipulating data structures, etc. अब दोस्तों हम बात करते हैं द ANSI स्टैंडर्ड के बारे में. द ANSI स्टैंडर्ड is an attempt to ensure that C++ is portable. That code you write for Microsoft's compiler will compile without errors using a compiler on a Mac, Unix, a Windows box or an Alpha. The ANSI standard has been stable for a while and all the major C++ compiler manufacturers supports the ANSI standard. अब दोस्तों हम बात करते हैं लर्निंग C++ के बारे में. The most important thing while learning C++ is to focus on concepts. The purpose of learning a programming language is to become a later programmer, that is to become more effective at designing and implementing new systems and at maintaining old ones. C++ supports a variety of programming styles. You can write in the style of Fortran, C, Smalltalk, etc. In any language, each style can achieve its aims effectively while maintaining runtime and space efficiently. अब दोस्तों हम बात करते हैं यूज ऑफ C++ के बारे में. C++ is used by hundreds of thousands of programmers in essentially every application domain. C++ is being highly used to write device drivers and other software that rely on direct manipulation of hardware under real-time constraints. C++ is widely used for teaching and research because it is clean enough for successful teaching of basic concepts. Anyone who has used either an Apple Macintosh or a PC running Windows has indirectly used C++ because the primary users interfaces of this system are written in C++. अब दोस्तों हम बात करते हैं C++ प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स के बारे में. Let us look at the simple code that would print the words hello world. Has include IOStream using namespace std. दोस्तों ये using namespace std है, वो आगे हमें टॉपिक में है तो उसके बारे में इतना ही जानिए कि using namespace एक प्रिंट है जो हमें स्पेस के बारे में प्रिंट कराता है. इंटीजर मेन सी आउट हमें सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ करके जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं और यहाँ पे सी आउट करके हमें लिखना होगा. सी आउट वो डबल लेस देन नहीं है दोस्तों, ये डबल लेस देन इंसरेशन ऑपरेटर है. हेलो वर्ड सेमीकोलन और रिटर्न 0. Let us look at the various parts of the above program. The C++ language defines several headers which contain information that is either necessary or useful to your program. For this program, the header IOStream is needed. The line using namespace std tells the compiler to use the std namespace.
Namespaces are a relatively recent addition to C++. The next line, uh, main, is where program execution begins, is a single line commands available in C++. Single line commands begin with slash slash and stop at the end of the line. The line integer main is the main functions where program execution begins. The next line, cout hello world, causes the message hello world to be displayed on the screen. The next line, return 0, terminates main function and causes it to return the value 0 to the calling process. अब दोस्तों हम बात करते हैं सी प्लस प्लस बेसिक इनपुट और आउटपुट के बारे में. C++ input output operation is using the stream concept. Stream is the sequence of bytes or flow of data. It makes the performance fast if bytes flow from main memory to device like printer, display screen or a network connection, etc. This is called as output operation. If bytes flow from a device like printer, display screen or a network connection, etc. to main memory, this is called as input operation. अब दोस्तों हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी header फाइल्स के बारे में. Let us see the common header files is used in C++ programming are. header फाइल यहाँ पे 3 है, iostream, iomanip और fstream. पहले हम बात करते हैं iostream के बारे में. It is used to define the cout, scene, cin and cerr objects which correspond to standard output stream, standard input stream and standard error stream respectively. अब दोस्तों हम बात करते हैं iomanip के बारे में. It is used to declare services useful for performing formatted input output such as set precision and set wow. अब दोस्तों हम बात करते हैं upstream के बारे में. It is used to declare services for user controlled file processing. अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के बारे में, यानी कि cout के बारे में. The cout is a predefined object of a stream class. It is connected with the standard output device, which is usually a display screen. The cout is used in conjunction with stream insertion operator to display the output on a console. Let's see the simple example of standard output stream. cout has include iostream using namespace std, integer main, कैरेक्टर एरे लिया है यहाँ पर. वेलकम टू C++ ट्यूटोरियल. cout वैल्यू ऑफ एरे इज और इंसरेशन ऑपरेटर एरे और इंसरेशन ऑपरेटर एंड एल. यहाँ दोस्तों यहाँ पे एंड एल है वो लाइन ब्रेक करने का है, जो हमने सी लैंग्वेज के अंदर स्लैश एन करके हम जो लिखते थे वो यहाँ पे एंड एल करके हमें लिखना होगा. हम अगर जो हमें स्लैश एन यहाँ C++ में जो लिखना है तो दोस्तों हम स्ट्रिंग के अंदर लिख भी सकते हैं, और यहाँ पे नहीं लिखना है तो हम एंडल भी लिख सकते हैं, दोनों ही चलेगा. यहाँ पर यहाँ का आउटपुट आया वैल्यू ऑफ एरेज. वेलकम टू C++ ट्यूटोरियल. अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम यानी कि CIN यानी कि इनपुट के बारे में. द CIN इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ iStream.
class. It is connected with the standard input device, which is usually a keyboard. The CIN is used to conjunction with stream extraction operator to read the input from a console. यानी कि दोस्तों एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यानी कि डबल ग्रेटर देन, उसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के नाम से जानेंगे. Let's see the simple example of standard input stream CIN. Has include IO stream using namespace std, integer age, cout enter your age और scene लिया है age. और फिर से cout में your age is और age और endel. यार यहाँ पे आउटपुट है यूजर ने एंटर योर एज 22 एंटर किया है और योर एज मैसेज प्रिंट है हुआ है 22. अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एंड लाइन के बारे में. एंड एल जो मैंने आपको पहले बताया वही. द एंडल इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ IOStream क्लास. It is used to insert a new line characters and flushes the stream. Let's see the simple example of standard and line handle. As include IOStream using namespace std, integer main, cout C++ tutorial, cout JavaScript point handle और cout में फिर से end of line handle. आउटपुट यहाँ पे क्या है? cout tutorial JavaScript. सी ट्यूटोरियल के बारे में पीछे एंडल नहीं है दोस्तों, तो देखिए C++ ट्यूटोरियल और जावा पॉइंट प्रिंट हुआ. जावा पॉइंट के बाद एंडल है, एंडल के बाद प्रिंट हुआ है एंड ऑफ लाइन और यहाँ पे एंड ऑफ लाइन प्रिंट हो गया. अब दोस्तों हम बात करते हैं C++ एरेस के बारे में कि हमें एरेस यहाँ पे कैसे लिखना होगा, कैसे लिया जाता है एरे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. An array in C++ is a collection of elements of the same data type stored in contiguous memory locations. It provides a way to store multiple values of the same data type under a single name and allows accessing those values using their index or position. एक एग्जाम्पल हम देखते हैं. C++ एरेज कमेंट में लिया है इंटीजर नंबर्स 5 और इनिशियलाइजिंग एरे एलिमेंट्स के अंदर कमेंट में लिखा है और उसके नीचे नंबर्स 0 इक्वल 10, नंबर्स 1 इक्वल टू 20, नंबर्स 2 इक्वल टू 30, नंबर्स 3 इक्वल टू 40. नंबर 4 इक्वल टू 50. एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स के cout नंबर्स 2 तो आउटपुट 30. अब दोस्तों हम बात करते हैं C++ पासिंग एरे टू फंक्शन. इन C++ टू यूज द एरे लॉजिक we can create function to pass array to function in C++. We need to provide only array name, function underscore name, bracket, array underscore name. अब दोस्तों हम बात करते हैं C++ passing arrays to function example print array elements के बारे में. Let's see an example of C++ function which prints the array elements. Has include IOStream using namespace std, void print array, integer array, bracket के अंदर 5, integer main, integer array 1, bracket 5 और equal to कर्ली ब्रैकेट के अंदर 10, 20, 30, 40 और 50. इंटीजर एरे 2 उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर भी 5 इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, 50, 25, 35 और 45 है. प्रिंट एरे 1 और प्रिंट एरे 2.
वॉइड प्रिंट यहाँ पे एक फंक्शन लिया है, वॉइड प्रिंट एरे इंटीजर एरे 5, सी आउट प्रिंटिंग एरे एलिमेंट्स एंडल फॉर इंटीजर फॉर लूप यहाँ पे यूज़ किया है, इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, सी आउट एरे आई ब्रैकेट के अंदर आई और स्लैश एन यानी कि एंडल। यहाँ पे प्रिंटिंग एरे एलिमेंट्स आउटपुट आएगा 10, 20, 30, 40 और 50 और प्रिंटिंग एरे एलिमेंट्स है 5, 15, 25 और 35 और 45। अब दोस्तों हम बात करते हैं C++ पासिंग एरे टू फंक्शन एग्जाम्पल प्रिंट मिनिमम नंबर्स। Let's see an example of C++ array which prints minimum numbers in an array using function. Has include IOStream using namespace std void print min integer array ब्रैकेट के अंदर 5 साइज ली है, इंटीजर मेन के अंदर इंटीजर एरे 1, 5 इक्वल टू 30, 10, 20, 40 और 50। इंटीजर दूसरा एरे बनाया है यहाँ पे 5, 15, 25, 35 और 45। प्रिंट मीन एरे 1 और प्रिंट मीन एरे 2। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है वॉइड प्रिंट मीन इंटीजर एरे 5, इंटीजर मीन इक्वल टू एरे 0 और फॉर लूप यहाँ पे यूज़ किए हैं int इक्वल टू 0 और i ग्रेटर देन 5, i प्लस प्लस। यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है इफ मीन ग्रेटर देन एरे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर i और मीन इक्वल एरे i। और सी आउट मिनिमम एलिमेंट इज मीन और स्लैश एन और यहाँ पे आउटपुट मिनिमम एलिमेंट्स इज 10 और मिनिमम एलिमेंट दूसरा एरे हमने जो बनाया था उसका है आया है आउटपुट 5। अब दोस्तों हम बात करते हैं C++ पासिंग एरे टू फंक्शन एग्जाम्पल प्रिंट मैक्सिमम नंबर्स। Let's see an example of C++ array which prints maximum number in an array using function. Has include IOStream using namespace std void print max integer array size यहाँ पे 5 ली है, integer main integer array 1 5 size 25 10 54 54 15 और 40। इंटीजर एरे 2 साइज 5 ली है और 12 23 45 44 67 और 54। प्रिंट मैक्स एरे 1 और प्रिंट मैक्स एरे 2। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है पॉइंट वॉइड प्रिंट मैक्स इंटीजर एरे 2 साइज ली है 5, इंटीजर मैक्स इक्वल टू एरे 0। फॉर लूप यहाँ पे चलाई है फॉर इंटीजर i इक्वल 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस। यहाँ पे एक कंडीशन ली है इफ मैक्स लेस देन एरे साइज ली है यहाँ पे i, मैक्स इक्वल टू एरे साइज i। सी आउट में लिखा है मैक्सिमम एलिमेंट्स इज मैक्स लेस एन और यहाँ पे आउटपुट आया है मैक्सिमम एलिमेंट इज 54 एरे के फर्स्ट एरे के अंदर और दूसरा एरे हमने जो बनाया था उसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट इज 67। अब दोस्तों हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में। A multidimensional array is an array of arrays representing tabular data with rows and columns. The most common example of a multidimensional array is a 2D array where each element is accessed using two indicates। एक एग्जाम्पल देखते हैं इंटीजर मैट्रिक्स 3 और 3। मैट्रिक्स के अंदर 0 0
equal to 1, matrix square bracket के अंदर 0 और 1 equal to 2, matrix square bracket के अंदर 0 और 2 equal to 3, matrix 1 0 equal to 4, matrix 1 1 5, matrix 1 2 6 और matrix 2 0 7, matrix 2 1 8 और matrix 2 2 9. See out matrix 1 1, our output 5. In this example, matrix is a 2D array with 3 rows and 3 columns. The indicates 0 0 0 1 etc. represents the elements is each row and columns. It's important to note that arrays in C++ are zero index, meaning the first element of the array has an index of 0. The second element has an index of 1 and so on. Array in C++ have a fixed size, which means the size must be known at compile time. If you need dynamic sizing or a more flexible data structure, consider using C++ STL containers like std, vector और dynamic memory allocation. अब दोस्तों हम बात करते हैं C++ pointers के बारे में. C++ pointers, the pointer in C++ language is a variable. It is also known as locator or indicator that points to an address of a value. The symbol for an address is represented by a pointer. In addition to creating the modifying dynamic data structures that allows programs to emulate call by reference, one of the principal applications of pointers is littering through the components of array or other data structure. The pointer variable that refers to the same data type as the variable you're dealing with has the address of that variable set to it. एक सिंटैक्स हम देखते हैं. डेटा टाइप पॉइंटर यहाँ पे लिया है स्टार वर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इंटीजर स्टार ptr. अब हम दोस्तों बात करते हैं हाउ टू यूज अ पॉइंटर. एस्टैब्लिश अ पॉइंटर वेरिएबल एम्प्लॉइंग द यूनरी ऑपरेटर एंड विच yields the address of the variable to assign a pointer to a variable's address. Using the unary operator, which gives the variable's value at the address provided by its argument, one can access the value stored in an address. Since the data type known how many bytes the information is held in, we associate it with a reference. The size of the data type to which a pointer points is added when we increment a pointer. यानी कि एड्रेस वैल्यू को पॉइंट किया. एड्रेस है जो पॉइंटर है और वैल्यू है वो वेरिएबल है, यानी कि एड्रेस वैल्यू को पॉइंट करेगा. अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पॉइंटर्स के बारे में. Pointer reduces the code any and improves the performance. It is used to retrieving strings, trees, etc. and used with arrays, structures and functions. We can return multiple values from function using pointer. It makes you able to access any memory location in the computer's memory. अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ पॉइंटर्स. देयर आर मेनी यूजेज ऑफ पॉइंटर इन C++ लैंग्वेज. Dynamic memory allocation. In C language, we can dynamically allocate memory using malloc and calloc function where pointer is used. Arrays, function and structures. Pointers
in C language are widely used in arrays, functions, and structure. It reduces the code and improves the performance. अब हम बात करते हैं सिंबल्स यूज इन पॉइंटर्स के बारे में. एंड एम्परसेंड साइन वो है एड्रेस ऑपरेटर और डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल. एस्टरिक्स साइन स्टार इंटीग्रेशन ऑपरेटर है एक्सेस द वैल्यू ऑफ एन एड्रेस. अब हम दोस्तों बात करते हैं डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर के बारे में. The pointer in C++ language can be declared using asterisk symbol, integer star a int और character star sin. अब हम बात करते हैं pointer example के बारे में. Let's see the simple example of using pointers printing the address and value. Has include IOStream using namespace std, integer main integer number equal to 30, integer star p equal to n number. Cout address of number variable is n number or endl. Cout address of p variable is p endl. Cout value of p variable is star p endl return 0. यहाँ पे आउटपुट एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल इज उसका एड्रेस प्रिंट हुआ. एड्रेस ऑफ पी वेरिएबल जो हमने ऊपर पॉइंटर बनाया एड्रेस आया और वैल्यू ऑफ पी वेरिएबल इज 30. Pointer program to swap two numbers without using third variable. Has include IOStream using namespace std, integer main integer a equal 20, b equal to 10, star p1 equal to end a, star p2 equal to end b. Cout before swap star p1 equal star p1 or star p2 equal to star p2 ender. यहाँ पे स्टार p1 इक्वल टू स्टार p1 प्लस स्टार p2, स्टार p2 इक्वल टू स्टार p1 माइनस स्टार p2, स्टार p1 इक्वल टू स्टार p1 माइनस स्टार p2. Cout after swap स्टार p1 इक्वल टू स्टार p1 इक्वल स्टार p2 इक्वल टू स्टार p2 एंड रिटर्न 0. आउटपुट है बिफोर स्वैप स्टार p1 इक्वल टू 20, स्टार p2 इक्वल टू 10, आफ्टर स्वैप p1 इक्वल टू 10, स्टार p2 इक्वल टू 20. अब हम बात करते हैं दोस्तों व्हाट इज अ नल पॉइंटर. A null pointer is not merely an incorrect address. It also points nowhere. Here are two ways to mark a pointer as null. Integer star ptr1 equals 0, integer star ptr2 equal null. What are reference and pointers? First, call by value. Second, call by reference with a pointer argument. Third, call by reference with a reference argument. एक एग्जाम्पल हम देखते हैं दोस्तों. Has include IOStream using namespace std, pass by value integer square 1, integer n एक वेरिएबल बनाया है. Cout address of n1 in square 1 and n and slash n, n star equal to n return 0. और यहाँ पे pass by reference with pointer argument void square 2 integer star n. Cout address of n2 in square 2 n slash n star n और star n equal to star n. और वापस pass by reference with reference argument void square 3 integer and n. Cout address of n3 in square 3 and n star n equal to n void example function बनाया है यहाँ पे. call by value integer n1 equal to 8. Cout address of n1 in main and n1 handle
cout square of n1 square 1 and n1 handle cout not change in n1 n1 equal insertion operator and handle call by reference with pointer argument integer n2 equal to h cout address of n2 in main and then n2 square 2 cout square of n2 and n2 handle cout change reflected in n2 handle call by reference with reference argument integer n3 equal to 8 cout address of n3 in main and n3 handle square 3 n3 cout square of n3 handle cout change reflected in n3 handle ड्राइवर प्रोग्राम यानी कि इंटीजर मेन फंक्शन एग्जाम्पल कॉल ऊपर फंक्शन बनाया है और नीचे कॉल किया है रिटर्न 0 ओके और यहाँ के आउटपुट देखते हैं एड्रेस ऑफ n1 इन मेन उसका एड्रेस प्रिंट हुआ है एड्रेस ऑफ n1 इन स्क्वायर 1 उसका भी एड्रेस प्रिंट हुआ है स्क्वायर ऑफ n1 64 नो चेंज इन n1 8 एड्रेस ऑफ n2 इन मेन उसका एड्रेस प्रिंट एड्रेस ऑफ n2 इन स्क्वायर उसका भी एड्रेस प्रिंट हुआ है square of n2 64 change reflected in n2 64 address of n3 in main उसका भी एड्रेस प्रिंट है और एड्रेस ऑफ n3 in square 3 उसका भी एड्रेस प्रिंट है square of n3 64 change reflected in n3 64 अब हम बात करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर इन C++. The size of is an operator that evaluates the size of data type constants variables and it is a compile time operator as it returns the size of any variable or a constant of the compilation time. The size which is calculated by the size of operator is the amount of RAM occupied in the computer. Syntax of the size of operator is given below. Size of data underscore type. In the above syntax, the data underscore type can be the data type of the data, variables, constants, union structures, or any of other user-defined data type. The size of operator can be applied to the following operand times when an operand is of data type is the parameter of a size of operator contains the data type of a variable, then the size of operator will return the size of the data type. Let's understand this second through an example. Has include IOStream using namespace std, integer main, cout size of integer data type, size of integer handle, cout size of float data type, size of float handle, cout size of double data type, size of double handle, cout size of character data type, size of character handle, return 0. In the above program, we have evaluated the size of the inbuilt data types by using the size of operator, as we know that integer occupies 4 bytes, float occupies 4 bytes, double occupies 8 bytes and character occupies 1 byte, and the same result is shown by the size of operator, as we can observe in the following output. Size of integer data type output हम देखते हैं 4, size of float data type 4, size of double data type 8, size of character data type 1. अब हम बात करते हैं when an operand is of class type. Has include IOStream using namespace std, class base integer a, integer main, base b, cout size of class base b, base is size of b, handle or return 0. In the above program, we have evaluated the size of the class which is having a single integer variable. The output would be 4 bytes as integer variable occupies 4 bytes. उसका आउटपुट देखते हैं, साइज ऑफ क्लास बेस इज 4.
अब दोस्तों हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉइड पॉइंटर इन सी एंड सी प्लस प्लस. In C, we can assign the void pointer to any other pointer type without any typecasting, whereas in C++ we need to typecast when we assign the void pointer type to any other pointer type. Let's understand through a simple example in C. Has includes stdi.h, integer main, void star ptr, integer star ptr1, integer a equal to 90, ptr equal and a, ptr1 equal to ptr. Printf the value of star ptr1 %d star ptr1 return 0. In the above program we declare two pointers ptr and ptr1 of type void and integer respectively. We also declare the integer type variable, i.e. a. After declaration we assign the address of a variable to the pointer ptr. Then we assign the void pointer to the integer pointer ei ptr1 without any typecasting, because in C we do not need to typecast while assigning the void pointer to any other type of pointer. Output the value of star ptr1 equal to 90. In C++ has include iostream using namespace std, integer main, void star ptr, integer star ptr1, integer data equal to 10, ptr equal to and data ptr1, bracket in the integer star or ptr int. See out the value of ptr1 is ptr1 or endl or return 0. In the above program we declare two pointer variable of type void and integer type respectively. We also create another integer type variable I data. After declaration we store the address of variable data in a void pointer variable I. Now we want to assign the void pointer to integer pointer in order. To do this we need to apply the cast operator, i.e. integer star, to the void pointer variable. This cast operator tells the compiler which type of value void pointer is holding. For casting we have to type the data type and star in a bracket like characters star or integer star. उसका आउटपुट देखते हैं. द वैल्यू ऑफ स्टार ptr1 इज 10. तो दोस्तों हमने आज बात की पॉइंटर्स और एरेस के बारे में, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और सारे की कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में हमने आज बात की. तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे. आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. हम फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.